हाय दोस्तों, दिस इज विशाली ऑन स्पॉटिफाई फ्रॉम ताजा टॉक। आज हमारे बीच में नेहा पनवर जी हैं, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। एंड बीइंग एन फीमेल, शी इज अ मल्टीटास्कर टू। शी इज एक्चुअली doing so many taking responsibilities, जिसके अंदर वो अपने बिजनेस को और अपने प्रोफेशन को, अपनी लाइफ को, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत खूबी तरीके से निभा रही है। तो आइए हम सब मिलके इनको वेलकम करते हैं। वेलकम नेहा मैम। Thank you so much, Vaishali. It's a pleasure being here. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैम, मैं चाहूंगी एक बार आप अपना सेल्फ इंट्रो दें, ताकि मेरे व्यूअर्स को ये बात पता चले कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करती हैं। Okay. I'm Neha Parmar. I am from Bengaluru and married in Pune right now. I have studied my financial management degree in 11th standard. So मेरी financial journey चालू होती है मेरी 11th standard से. So that's why today I am what I am today because of my upbringing in the financial world. Across the years, I've had the opportunity to work with diverse clients, इंडिविजुअल से लेके फैमिलीज से लेके स्मॉल बिजनेसेस से लेके कॉरपोरेशंस के साथ। एंड मेरा काम ज़्यादातर ये रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, रिटायरमेंट प्लानिंग करना, रिस्क असेसमेंट करना, टैक्स ऑप्टिमाइज करना। सो मेरा काम इसी में सीमित नहीं है, इसके अलावा मेरा ये भी काम है कि आपको मैं फाइनेंशियली लिटरेट करूँ टू हेल्प यू deal with, like, why finances are important for us in our day-to-day life. I also help my clients in setting and achieving their financial goals. मार्केट फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं, किस रीज़न के लिए होते हैं, एंड इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन क्यों लेना चाहिए, इसके लिए आई वर्क टुवर्ड्स अ वेरी पर्सनल mission. I could say that I am trying to educate 1 lakh women and make them financially literate and provide them a platform to be financially independent for their future. वाओ! तो मैम, जैसे आपने बताया कि आपकी ये जर्नी बीइंग एन 11th क्लास स्टूडेंट, आई शुड से, शुरू हो गई थी। तो व्हाट इज अ बेसिकली अ बैकग्राउंड बिहाइंड इट, कि आपको ऐसा क्यों लगा कि दैट डेफिनेटली आपने इसका मतलब फाइनेंसेस एंड कॉमर्स, वी कैन टॉक अबाउट दैट, कि कॉमर्स आपने स्ट्रीम ली, राइट? Right. तो देयर इज एनी रीजन बिहाइंड इट दैट यू हैव टेकन द commerce as and to become a financial advisor pursuing this business? So I was in a boarding school and I really didn't want to do science. However, मेरे को डॉक्टर बनने का शौक था, और वो भी डेंटिस्ट। इंजेक्शन से बहुत काफ़ी डर लगता है, but then Oh, and then I don't know, something happened and मैंने मेरा पूरा चेंज ही कर लिया फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स। पल्ले नहीं पड़ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन दैट्स हाउ माय फाइनेंशियल जर्नी स्टार्टेड। बैकग्राउंड ये है कि हमको एनआईएसएम की, मैंने मेरी पहली एनआईएसएम की एग्जामिनेशन 11th स्टैंडर्ड में दी थी। फिर मैंने इसको आगे जाके परसू की, बीबीए किया इन फाइनेंस, एमबीए किया इन फाइनेंस, सीएफपी की पढ़ाई कर रही हूँ अभी जाके आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, माय पर्सनल गोल दैट इज a lot to be in this profession, a lot drew from my personal financial goal. हम एक ऐसे environment से आते हैं where we were allowed to make our own financial decisions. However, हमारी जो community है, मेरे जैसे liberal lifestyle किसी को मिली नहीं है. So just with the mindset to educate everyone, I am doing this today, what I am doing. ओके, फाइन। तो मतलब आपका एक बहुत क्लियर फोकस है कि जितनी भी फीमेल्स हैं Yes. आपके कॉन्टैक्ट्स में, तो यू वांटेड टू ग्रो देम बेसिकली।
So basically, it started when a community member told my father that क्या ही कर लेगी इतना पढ़ाई करके क्या करोगे. So my Hmm. father told him कि it's not necessary that what will she do or what will she not do. So basically I have been independent from the class 8 standard, and then that's how my financial journey started. I was in a boarding school. My father always pushed me to do whatever I wanted to pursue with. To go into colleges, make decisions were given allowed for me to do them very earlier in my life, right? So not a lot of women are allowed to do that in their journey, right? Some of them end up working, some of them have to work, they don't have choices. Some of them work with a clear goal कि मुझे पैसे कमाने हैं करके. Hmm. But my goal was very clear that I want to be productive and give back to the community in certain way. So Okay, that is very very clear actually. ओके, मैम जब आप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे आप काम करती हैं, बीइंग एन right, फाइनेंशियल एडवाइजर, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता होगा। right. तो किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं एंड हाउ डू यू ओवरकम दीज चैलेंजेस? So major challenges was I am so my main challenge is ups and downs in the market, right? अगर अगर कोई straight line में काम होता या फिर जिंदगी straight line में रहती, so we wouldn't have any sort of ambitions, right? So market also don't work in a straight line. There are ups and downs in the market. So the major challenges come when the market falls down very suddenly. It could be due to any sort of the reason. It could be economical reason, it could be environmental reason, it could be macroeconomic reason. So there are or it could be some event that has happened in some other country, we normally get impacted. So one of the challenges that we faced was COVID-19 crisis. ये वाह, अकेले हमारे इंडस्ट्री ने नहीं फेस किया था. It was एम्पायर। in entirely and each and every industry. So when you talk about challenges, we have to deal with client because we are managing their finances, right? When we are managing their finances, we are answerable to them. Why has a particular fund or a stock has underperformed? It was precisely situational, and major challenges is to hold them back until or unless this challenge is not recovered, right? So हम सबको we remember COVID how it was. It took away lot from us, but it gave a lot to us, right? So similarly in stock market also, it the value of the money went down, like the prices of stocks went fell down very sharply, but then it also increased over a period of time, right? So recovery, कोई भी challenges आते हैं तो उसमें recovery होते हैं. You overcome those challenges. So my major crisis was this, where I'll just cite an example of a client. I had a client who was almost nearing retirement, and when I talk about retirement, almost 50 to 60-year-old person, almost nearing retirement, 61, 62, say looking forward for passive income, right? So when COVID hit, his portfolio drastically came down, right, due to market volatility and caused by the pandemic. This, I understand, this client was very anxious कि अभी मेरा पैसा चला गया, मेरे रिटायरमेंट प्लान का क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो का साइज कंसिडरेबली छोटा हो गया है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए. सो हाउ वी हैंडल सच सिचुएशन इज वी reassess their goals, we rebalance their portfolio, and we डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट्स. सपोज हमने जो इन्वेस्टमेंट प्लान इस कोविड के पहले ली थी, तो कोविड के बाद वो सिचुएशन चेंज हो जाती है. काफ़ी चेंज हो जाती हैं। सो अगेन कम्युनिकेशन इज द की टू एनी प्रॉब्लम. हमारी कांस्टेंट बातचीत होती रही, एंड आफ्टर अ टाइम, like say about 2 years, I'm sure my client is getting more than what he was expecting at that time in his retirement kitty.
तो इसका मतलब मैम कोविड के टाइम पे तो आपके काफ़ी क्लाइंट्स के साथ इश्यूज़ रहे होंगे, क्योंकि डेफ़िनेटली मतलब बीइंग एन वर्किंग प्रोफाइल अगर हम देखें तो सोसाइटी ने बहुत बहुत मेजर डाउनफॉल देखा था कोविड के टाइम पे। राइट, राइट, तो आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स हैंडल की होंगी। तो इसमें से कौन-सा एक इंटरेस्टिंग केस है जिसने आपको कुछ सिखाया? आपको लगा कि येस दिस इज़ व्हाट आई गॉट इट लाइक एवरी होता है ना कि जैसे कहते हैं ना कि हर मोमेंट हमें कुछ ना कुछ दिख के जाती है। तो राइट। इस तरह सो से आपको उसमें क्या मिला? कोविड, ये जो मैंने सिचुएशन, जो रिटायरमेंट प्लानिंग वाली मैंने सिचुएशन साइट की है, इसमें हम लोगों ने एक बात सीखी कि कभी आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। टू, यू शुड ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड नो मैटर व्हाट, बिकॉज द गुड टाइम्स आर ऑलवेज अहेड। अगर मार्केट गिरा है तो उठेगा भी। प्लीज स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट्स, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, बिकॉज लॉन्ग टर्म इज द ओनली way to create wealth for your investments. थ्री, हैव कम्युनिकेशंस। आपकी जो भी, when you have clear communications about the situation, you always evolve from those situations. And always emphasize on emotional support when you're doing financial planning, because you need to think from both the perspectives. Ki, a client thinks from an emotional perspective, I think from a practical perspective, right? So by being in constant loop and having a constant conversation, it allows clients to stay invested for a longer period of time and get impacted by these changes in the market. ओके। तो मैम जैसे अभी आपने बताया मुझे यू कीप कम्युनिकेटेड विद योर क्लाइंट्स दैट इज़ द बेस्ट राइट? तो अगर हम बात करें कि जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं एंड दैट टाइम क्लाइंट्स जो होते हैं कई बार हमारे बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं डाउनफॉल Right. से, मार्केट रिस्क से और एनी इमोशनल रीजंस। तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हो? किस तरह की आप एडवाइस देते हो? क्योंकि ये एडवाइस जो है मेरे डेफिनिटली लिसनर्स एंड व्यूअर्स के लिए भी बहुत काम आएगी। तो हाउ टू गेट मोटिवेटेड टू व्हाइल दे आर इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट, तो Right. उस सपोर्ट के अंदर उनको मोटिवेट कैसे रहना है? प्लीज़ बताइए। ओके। सो जब आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें एक अपसाइड भी रहता है एंड डाउनसाइड भी रहता है। Downside is your risk associated with it, and upside is your returns that you are achieving, right? So when you're investing, always different investment comes with different its own set of potential risk and benefits. For example, आप जब फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये एक आपका माइंडसेट ये रहता है कि ये मेरे को फिक्स रिटर्न देगा। इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से नहीं बदलने वाला है एंड जी। लिक्विडिटी रहेगी एंड आपकी ये सबसे सिक्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, राइट? दैट इज योर माइंडसेट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। आप रिटर्न्स के बारे में नहीं सोचते हो बिकॉज द रिटर्न्स आर ओनली 4 to 5%। आज के डेट पे अकॉर्डिंग टू द न्यू, आज की डेट पे यू आर गेटिंग 7.75% इन योर, अप टू 7.75% ऑन योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जब आप जब इन्वेस्टमेंट्स को और डाइवर्सिफाई करने जाते हो तब आता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन होता है, दूसरा प्रोफेशनली मैनेज्ड रहता है, तीसरा रिस्क लिक्विडिटी रहता है, बट इट कम्स विथ वन रिस्क दैट इज मार्केट लिंक रिस्क, राइट। right? What is market link risk? Market linked risk is nothing but you're indirectly investing in stock market. So of course your investments will go up and down, but you're also getting inflation beating returns. So every again, आप यहाँ पे जब भी म्यूचुअल फंड में रिडीम करना चाहोगे या लिक्विडिटी जो हम बात कर रहे हैं, यू कैन रिडीम इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि आप एफडी में जाते हो, एफडी में अगर प्री मेच्योर विड्रॉल पे आपको एक ये पे करना पड़ता है, पेनल्टी चार्जेस। करनी पड़ती है, राइट? राइट, Whereas राइट, in राइट। mutual funds, you do not have to pay any penalty if you want to pre-redeem these investments. Again, हम लोग कंपेयर करते हैं रिटर्न्स को।
So FD में returns up to 7.75% है आज के डेट के basis पे, whereas in mutual fund you're getting up to 12%. So if MF is giving me higher returns, risk is associated, that is, it is linked with market. It is linked with the market. Okay. Whereas FD is giving me lower returns, but इसमें आती है different risks such as penalty where you want to redeem your investments, right? So different investments come with different type of risk. You have to understand what are you most comfortable with. Say for example, if you're a young person, always take mutual fund as in your approach. When you're nearing your retirement, take fixed income investments as your uh, lit- you need fixed passive income. आपके investments में passive income चाहिए, तो आप वो approach, investment approach choose करो. So that's the ideal way to balance between what suits well at what age, what investment Okay. suits well at what age. ओके। तो आपके हिसाब से मैम इसके लिए कोई हमारे पास एज बैरियर्स हैं जो हमें म्यूचुअल फंड्स में या इन्वेस्टमेंट के लिए हमें देखना चाहिए? एट व्हाट एज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? At any age you can start. A child who's just born, probably 6 months, 12 months, 1 year old, can also start with the investment, whereas an elderly person, 60, 70, 80, can also invest in mutual funds. However, the investments varies from a child to an old person. जैसे कि child के लिए काफी समय है तो you can invest in equity, whereas an older person can invest in a fixed return, fixed maturity product, or probably a debt fund or something like that. ओके। तो मैम जब बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर मैं कहूँ कि मैं एक क्लाइंट हूँ, तो मुझे किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो? Okay, so first thing you need to understand is आपका goal क्या है. आपको personalized assessment करना. First, like when you sit with your financial planner or you're doing it DIY, first you need to write down your financial goals. उस goals को आप एक लिखो, प्राइस लाइन लिखो कि से फॉर एग्जांपल मुझको कार खरीदनी है, तो कितने समय में मुझको कार खरीदनी है और कितना वैल्यू का कार खरीदनी है, एंड फिर ओके, रिवर्स कैलकुलेशन करो कि आज के दिन पे मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि 5 साल बाद मैं ये गाड़ी खरीद सकूं. ओके। तो ये मतलब हमारी जनरेशन के लिए हो गया, जो अपकमिंग जनरेशन है, यूथ है हमारा, कि हाउ टू प्लान देयर फाइनेंशियल दिस थिंग, कि उनको किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। ओके। और मैम अगर मैं कहूँ कि किस अमाउंट से हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? An individual can start with as low as 500 rupees. आजकल 100 rupees की भी SIP आने चालू हो गई है. So 500 rupees is the basic that you can start with, and there is no capping on how much maximum amount की कितना आप invest कर सकते हो. It depends on your income. Always follow this rule that income minus savings is equal to expenses. आप पहले आपका जो भी इनकम आता है उसमें आप पहले आपकी सेविंग्स करो, फिर बचे कुछ पैसे से आप से एक्सपेंसेस करना. सो दैट्स हाउ यू शुड बी वर्किंग आइडियली ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. ओके। मैम अगर मैं कहूँ कि बीइंग एन प्रोफेशनल, आप इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, तो हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ? इट मीन्स आपको प्रोफेशनली भी अपडेट रहना है, फैमिली में भी अपडेट रहना है, तो आप कैसे ये सब चीज़ें मैनेज करते हो? Okay, so professionally, I stay updated with the latest trends. I read a lot. पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमको financial regulations, industry trends, और personal goals. You have to be continuously updated with what is going around you. Reading can solve a lot of your problems, and personally, you just manage everything if you have defined goals. Ki, if you work with schedules and timeline, everything falls into places. ओके।
तो मैम जब आप ये करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आप फेस करते होगे डेफिनेटली जब आप इसको Definitely. पर्सनलाइज करते हैं आपके गोल्स आपके सेट होते हैं तो आप जब इनको करते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करना होता होगा आपको क्लाइंट भी मैनेज करना है तो किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो नहीं आई हैव टू गेट अप एंड डू दैट ये मुझे करना ही है आज तो हाउ डू यू डेफिनेटली बीइंग एन फीमेल आई कैन अंडरस्टैंड सम डेज आर लाइक दैट कि हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं बट Absolutely. तो वो आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो So, sometimes I am demotivated and demotivated like to the least point कि मुझे आज कुछ करना ही नहीं है. So, take Sundays off, don't do anything. That's the best way to recover for the entire week. ओके मतलब यू टेक अ ब्रेक फॉर योरसेल्फ एक्चुअली Yes, Sundays, no messages, no calls, nothing. It's like I don't even read my messages to be very honest, and ओह I don't even answer few calls unless my mom and dad are calling या or immediate family is calling. Uh, that's how it is. I mean, that's the way it pushes me forward to be motivated throughout the week. दैट्स समथिंग वेरी गुड एक्चुअली इस तरह से कभी हमने सोचा नहीं कि वी शुड गिव अ ब्रेक टू आवरसेल्फ कि जिस तरह से हम अपने आप को एंड दैट मीन्स यू स्पेंड अ कंप्लीट होल संडे विद एंटायर योर फैमिली ओनली Yes, नो आउटसाइडर्स आर no. into it that's something wonderful this is something new which we are getting actually या ओके मैम मैम अगर मैं बात करूं कि व्हाट अबाउट दिस जो अब हमारी अपकमिंग जनरेशन है Right. राइट आपने बहुत सारी चीजें बताई फाइनेंशियल एडवाइजेस को लेकर के तो अगर मैं कहूँ कि आप जो अपकमिंग जनरेशन है वो अगर बीइंग एन फाइनेंशियल एडवाइजर इस तरह से अगर आपके कैरियर को जो the same thing you are following he or she follows तो what they need to start with कहाँ से उनको शुरू करना होगा so that they can jump into it and as successful as you are. I think like most of the young generation is very clear with what they want to do. However, if you want to start with, understand what is your goal or what you're trying to do, and then like we have to clear our NISM certification, CFP examination, CFA examinations. ये सारी एक, there are certain set of examinations that you need to give, and then it starts with NISM certifications, certified financial planner, certified financial analyst, and then you can become a financial advisor. To, of course, you need to start with the basics and then give CFAs until the end. That's how it is. ओके एक चीज और बताइए मैम हाउ डू यू डिटरमाइन व्हाट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज or the products are suitable to the particular client. So it differs from goals from person to person. Say for example, Okay. I have a different goal and you have a different goal. I am at a Right. different life stage and you are at a different life stage. Okay, and Right. so we understand from life stages and the goals कि आपकी और मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कैसे डिफर करती है. सो से फॉर एग्जांपल like I as an individual want to take only I can take higher risk. So I would want to invest only in equity. Vaishali as an individual would not want to take higher risk, right? She wants to be an average investor, like take a 50% of her portfolio should have some risk, and 50% should be invested in a very less risk, right? So what I do is develop a portfolio in a way where certain amount is invested in gold, certain amount is invested in mutual fund, certain amount is invested in corporate fixed deposit, whereas her investments are diversified. So for me, since I am an aggressive risk taker, I will be investing in either in stocks or mutual funds. That's how two different individuals, two different person can have two different investment plans.
ओके, नाउ अब मुझे आप एक चीज बताइए कि हाउ, मतलब हाउ डू यू स्टे, जैसे हमने अभी बात करी कि आप बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में काम करते हैं, राइट? क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीजें आपको मैनेज करनी है, हमें हर चीज का एक पर्टिकुलर सिस्टम है। और जैसे अभी आपने बताया कि संडेज को आप पूरा हॉलीडे रखती हैं, ये चीज एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव चीज आपने हमें बताई। तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे कोई एक सक्सेस स्टोरी या टेस्टिमोनियल, जिससे आप मेरे सुनने वाले जो हैं लिसनर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आप उनको कुछ दे सकें, कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके अंदर, डेफिनेटली सक्सेस स्टोरीज मींस कि आपका एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस प्लस आपका क्लाइंट Okay. जो बहुत Uh, खुश रहे हैं। okay. So, 2 year, 2 years back, I went on a trip Okay. and I met this lady who's 62-year old, and all I heard her saying was, "I have invested. I've been investing. I've worked hard for all these years. I want all these investments to come to me as a passive income." uh, when I reviewed her portfolio, and I just told her, like, you've invested. I think this should come back to you as monthly income in the passive form. So what she told me was, I've always worked hard all my life. I have always invested all my life. Every penny that I've earned, like 20-30% I've put into my investments, so that my older days would be very comfortable and the way I want to live it. What I learned from her and what I am giving to her is, of course, the life, carefree life, things that she wants to buy, and a lifelong relationship. But only thing is, I want to say is, always save, invest that every penny, extra penny that you get, because we always get, uh, you know, uh, we always get inspired, or probably, lured to buy certain things that are not required, right? So always stay ground on what are your needs and wants, and allow your investments to grow. And that's what I have learned from her, and what she's been telling me, that I've found the best advisor after so many years. Like, I'm not even half her age. या एग्जैक्टली आपने जैसे बताया अभी कि हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स, हम बहुत बेकार की शॉपिंग्स करते हैं, बहुत विच इज एक्चुअली, आई शुड नॉट से कि हम बेकार की करते हैं, इट्स लाइक कि हमें इट इज नॉट नीडेड बट वी Yes. डू इट, तो वी शुड So, इन्वेस्ट दैट मनी टू फॉर आवर फ्यूचर सिक्योर। yes. ओके, थैंक यू सो मच मैम। अब मैं चाहूंगी कि आप मेरे व्यूअर्स को और लिसनर्स को एक अच्छी सी एडवाइस दें, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी अ फाइनेंशियल सिक्योर हो सकें अपने फ्यूचर को लेकर के। Okay. Okay. So, start now, start small. There is no right or wrong time. Today is the best day to start your investment journey. Uh, Always think long term, because it's only when you invest in long term you will be able to create that wealth. And also understand the difference between, investments that are generating wealth for you, and sorry, creating wealth for you, and giving you better returns than traditional way of investments. I would advise you to follow, advise you to invest in the modern ways to invest, that is mutual funds or stocks. Always take right advisory from the right financial advisor who has the right knowledge and who can guide you achieve your financial goals. And always think long term is what I would. So there is this saying that, there are seven wonders in the world, and the eighth wonder is power of compounding. Always believe in power of compounding. It's
it's in the long run you create wealth for yourself. थैंक यू सो मच मैम फॉर अ वंडरफुल एडवाइस। अब मैं चाहूंगी मैम कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स आप मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ताकि दे विल कनेक्ट यू डायरेक्टली। Sure. So you can connect me on LinkedIn by the name Neha Parmar, and on Instagram as Neha Parmar, and on Facebook as Neha Parmar. So you can connect me and I can help you out with all your queries there. थैंक यू सो मच नेहा मैम। सो व्यूअर्स, ये थी हमारे बीच में नेहा मैम, जिन्होंने हमें फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए बहुत अच्छी एडवाइजेस दी, और डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू सिक्योर योर फ्यूचर ऑल्सो। और जो मेरे अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है उनको भी डेफिनेटली इस थॉट प्रोसेस से बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत कुछ समझ आएगा। सो आई रियली थैंक यू सो मच मैम कि Thank you आप so हमारे शो much. पर आए, एंड वी आर लकी टू हैव यू ऑन आवर फ्लो। थैंक यू सो Thank you मच। so much. Thank you for this opportunity. तो व्यूअर्स, इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you.